Rahim. Assalamu alaikum, dear student of class 1. Hope you all will be fine. Welcome to your computer class. Dear student, in our previous video, we have worked on book page number 47. And today we are going on work on book page number 48. So let's start. Open your book page number 48. Dear student, it is a book page number 48 of your computer book. Let's start. द रिबन कंटेंस अ शेप्स ग्रुप. रिबन जो है वो कंटेंस है किस पर? शेप्स ग्रुप पर. स्टूडेंट, हेयर इज रिबन. इट इज़ कॉल्ड रिबन एंड रिबन कंटेंस ऑन शेप्स ग्रुप. रिबन्स में जो हैं ये जो हैं इसको हम क्या कहेंगे? शेप्स ग्रुप. ओके, वी कैन यूज़ डिफरेंट शेप्स टू ड्रा सर्कल्स, ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर्स. हम जो है मुख्तलिफ शेप्स यूज़ करते हैं किस लिए? ड्रा करने के लिए. क्या ड्रा करने के लिए? सर्कल्स, ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर. अगर हमें सर्किल ड्रा करना है तो हम सर्किल शेप यूज़ करेंगे. ट्राइंगल ड्रा करना है तो ट्राइंगल की शेप यूज़ करेंगे. अगर स्क्वायर्स को ड्रा करना है तो हम स्क्वायर शेप यूज़ करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द एक्सरसाइज एंड टुडे योर एक्सरसाइज इज फर्स्ट वी राइट डेट ऑन द बुक पेज 48. ओके, अ डिश इज़ आल्सो यूज्ड फॉर डेकोरेशन. जो है कौन सी चीज़ है जो यूज़ होती है डेकोरेशन के लिए? रिबन. रिबन इज़ आल्सो यूज्ड फॉर डेकोरेशन. एन ओपन स्पेस इज़ आल्सो कॉल्ड. एन जो ओपन स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं? एरिया. ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द प्रैक्टिकल वर्क. डियर स्टूडेंट, ओपन पेन प्रोग्राम इन योर कंप्यूटर्स एंड लेट्स स्टार्ट. हेयर इज शेप्स टूल. वी क्लिक ऑन शेप्स. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू ड्रा oval shape. We click on oval shape and now click on the empty area. It means के drawing area. Okay, अब अगर हम इसको मूव करना चाहते हैं with the help of this arrow we move this shape in center. Okay, अगर इसकी हमने साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो with the help of this arrow हम ये कर सकते हैं इसकी साइज को इंक्रीज और डिक्रीज. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई वांट अनदर शेप. क्लिक ऑन दिस शेप, ड्रा ऑन द ड्राइंग एरिया. ओके, लाइक दिस. नाउ आई वांट टू कलर दिस शेप. फर्स्ट आई सिलेक्ट फिल विथ कलर टूल. पहले हमने क्या सिलेक्ट करना है? फिल विथ कलर टूल को सिलेक्ट करना है. देन वी गो टू सिलेक्ट द फिल विथ कलर टूल एंड देन कम टू द कलर प्लेट एंड सिलेक्ट एनी कलर इफ यू वांट टू. ओके, फॉर एग्जांपल आई वांट टू कलर येलो कलर. आई सिलेक्ट येलो कलर एंड नाउ फिल इन द रेक्टेंगल शेप. ओके, in circle I want to color pink color. Select the pink color and click on the circle like this. Okay students, now it's time to your homework and today your homework is complete book page number 48 and practice the shapes tool. Okay, during the practice record your video and send me on WhatsApp group. Okay student, take care. Allah Hafiz.